Hello dear student, now I'm going to start the BST of class 11th commerce section, and today's topic is the capital structure and the working capital and fixed capital. Okay, in the previous classes we have learned about the financial management, introduction about the financial management, objectives of financial management, and the financial decisions. And under financial decision, there were three parts: investment decisions, financial decisions, and dividend decisions. Okay. So after completing that portion, now we are just going ahead with the capital structure, fixed capital, and working capital. So let's see the capital structure first. Now let's see what is the capital structure first. See, the capital structure means the proper mix up between the owner's fund as well as the borrowed fund. Owner's fund here relates with the equity and borrowed fund relates with the debenture. See, ओनर्स फंड का मतलब है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स के जो फंड है दैट इज ओनर्स फंड, जिन्होंने शेयर परचेस किए हैं कंपनी के, एंड बोरोड फंड का मीनिंग है द कंपनी हु हैज टेकन ए लोन फ्रॉम द आउटसाइडर्स एंड दैट इज अ डिबेंचर. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज अ डिबेंचर होल्डर. नाउ गो विथ योर बुक्स. नाउ see capital structure, it refers to the mix between both the owner's fund and the borrowed fund. Okay, and the debt in the overall capital is called a financial leverage. Okay, see, the debt means a type of loan, and here the debt is considered as a borrowed fund and also called as a debentures. When the debt in the total capital is high, then the firm will be called a highly levered firm, and if the debt in the total capital is low, that is called as a lower levered firm. Okay, now let's see what is the levered first. See, the levered means more risk, more return. This is a levered. So if we issue a more debentures in the market, or we raise a more fund through the more borrowed fund, it means company has taken a more risk and paying more interest in order to get a return. But it depends upon the company's position that how much company earns. Okay, so that's why we say that we have taken a risk as a company. So if the more debt, that means a more levered, and the low debt, that is a low levered. Okay, now let's see the factors. What are the factors that affects the capital structure? Now number one, the cash flow positions. See, the cash flow shows the inflow of cash as well as the outflow of cash. Okay, but here the cash flow position means कि कंपनी के पास ऑलरेडी कितना कैश अवेलेबल है और उसे कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है. सी हियर, इफ मोर कैश फ्लो पोजीशन, इट मींस द हाई फंड रेज्ड बाय इशूइंग डेब्ट as they are to be paid back after some time. It means कंपनी के पास अगर कैश फ्लो ज़्यादा है तो कंपनी यहाँ पे डेब्ट इशू कर लेती है और वो इजीली इंटरेस्ट भी पेड कर लेती है ऑन टाइम पे. नाउ सेकेंड इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स कि कंपनी की अर्निंग कितनी होगी कि वो कितने टाइम में अपना इंटरेस्ट यहाँ पे कवर कर सकता है जो कंपनी ने डिबेंचर्स होल्डर को पे किया है. सो सी हियर, this is the formula of interest coverage ratio, EBIT divided by interest. You know EBIT means what? Earning before interest and taxes.
इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के पहले जो अर्निंग है कंपनी की उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल इंटरेस्ट से, देन विल गेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सो इफ देयर इज अ हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, it shows a more borrowed fund company has taken, and it also shows the number of times EBIT covers the interest. Means कितने टाइम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को कवर कर लेता है. ओके, नाउ थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो फंड जहां पे इन्वेस्ट किया है वहां से उसे कितना इनकम आ रहा है, और कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है उस पर कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है. अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा है और इंटरेस्ट पेमेंट कम है, इसका मतलब कंपनी फेवरेबल पोजीशन पे है. सी हियर, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is more than interest paid on debts mean debenture, so it shows a beneficial for a firm. मतलब अगर कंपनी ने जो रिटर्न कमाया है अगर वो ज़्यादा है और जो इंटरेस्ट पेड का अगर वो कम है, मतलब कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट वन इज द फ्लोटेशन कॉस्ट. सी द फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? See, the flotation costs are the cost which is incurred by the company at the time of issuing securities. See, for example, जब कंपनी मार्केट में सिक्योरिटीज यहाँ पे इशू करती है, at that time जो भी कंपनी का एक्सपेंस होता है related to that, that is a flotation cost. Now I will tell you. See, the cost of issuing securities like a brokers means a brokerage, commission, underwriters, and the expenditure on prospectus, these are the flotation cost. If higher the flotation cost, then less attractive is the sources of finance. अगर कॉस्ट ज़्यादा होगा तो लोग फंड को रेस करने से कतराते हैं, मीन्स दे अवॉइड दैट फंड वेयर द कॉस्ट इज हायर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल कंसिडरेशन. See what happens if existing shareholders want to retain the control of business, then borrowed fund easily available. Okay, इसके कहने का मतलब है जो हमारे एग्जिस्टिंग जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो अपने राइट्स को कंपनी में मेंटेन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो कंपनी इक्विटी का जो बैलेंस है वो उतने ही रख देती है, फिर कंपनी बोरोड फंड ज़्यादा रेस करती हैं. लेकिन इफ़ रेडी फॉर डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है अगर वो अपने राइट्स को नहीं रिटेन करना चाहते, वो जाना चाहते हैं, देन इक्विटी कैन बी यूज्ड फॉर रेजिंग फाइनेंस. तो कंपनी को मजबूरी में वो इक्विटी को ही रेस करना होता है, ना कि डिबेंचर्स को. ओके, सी हियर नेक्स्ट वन, द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. सो इन द कैपिटल मार्केट there's a two period comes here. First, the boom period where the company is in a top position, and second, the depression where the market is totally down. See, during boom, the finance raised by issuing securities, that is the shares. But during a time of depression, the raising finance by means of debt becomes easy. अब ध्यान देना, जब मार्केट में बूम पीरियड है, मतलब कि कंपनी के एकदम टॉप पोजीशन पे है, मतलब कि कंपनी के शेयर वैल्यू हाई होगा, उस टाइम पे कंपनी शेयर्स को ही इशू करती है ताकि से ज़्यादा फंड रेज हो जाए. बट जब डिप्रेशन का टाइम आएगा तो कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, तो कोई बाय नहीं करेगा. इन दैट केस द कंपनी गो फॉर डेब्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज द पीरियड ऑफ फाइनेंस. See, there is the two type of finance available. First, for a permanent capital. अगर हम यहाँ पे परमानेंट कैपिटल के थ्रू जाएंगे तो मेनली इक्विटी शेयर ही परमानेंट कैपिटल है. देन कंपनी ऑलवेज प्रेफर विद द इक्विटी शेयर मस्ट बी इशूड, बट फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म ऑलवेज गो फॉर प्रेफरेंसेस और डिबेंचर्स. ओके, सो दिस इज द फैक्टर्स which affects the capital structure. Now the next one is the fixed capital. What is the fixed capital first? See, the fixed capital means the capital which is required for a longer duration and for buying a plant and machinery. Okay, and this amount cannot be paid in a short time
if they are demanded by those who have given, so that is not reversible without incurring heavy losses. Now see, the fixed capital refers to investment in a long term assets. Long term asset means what? The plant and machinery, equipment, the technology, and this is for a longer duration period. Okay, this is not for a shorter period, and the finance through long term source of capital, and this capital is not reversible without incurring heavy losses. अगर आपको ये वापस करना होता है तो हमें इसमें लॉसेस ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं. Now here some of the factors which affects the fixed capital. So these are as under. See, the first factor is the nature of business. See, यहाँ पे देखना है कि किस तरह के बिजनेस आप यहाँ पे करते हो एज अ फर्म, whether manufacturing concerns or a trading concerns. If there is a manufacturing concern, so manufacturing concern means just like a factory. Okay, so the manufacturing concern require a huge amount of investment in fixed asset like plant and machinery, etc. But if the firm is doing a trading concerns, so it need a less fixed capital because they are not required to buy any plant and machinery. Now the second one is the scale of operation. The scale of operation means whether the fixed capital requirement on a small level or a large level. See, if there is a large scale organization, so if large scale organization, so that needs a more amount of fixed capital as compared to the small scale organization. अगर छोटी कंपनी है तो कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बट अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे ज़्यादा फिक्स कैपिटल यूज होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजी. यू कैन सी हियर. सी, इफ अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी कंपनी होती है दे यूज अ मॉडर्न इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज, बट जो छोटी कंपनी होती है वेयर एज द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दे ऑलवेज यूजेस अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक. मतलब वो लेबर को रख के अपना काम यहाँ पे निकाल लेते हैं. सो जो छोटी कंपनी को कैश फ्लो मीन जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू दी बड़ी कंपनी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स. सी, इफ मोर प्लानिंग फॉर ग्रोथ नीड्स मोर कैपिटल. अगर कंपनी यहाँ पे बड़ा प्लान करती है फ्यूचर में तो उसे यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, सी नेक्स्ट वन इज द डाइवर्सिफिकेशन. If company goes for diversification, then more funds need to buy the plant and machine. देखो, see, the diversification means ये है कि कंपनी यहाँ पे चेंज हो रही है धीरे धीरे और अपने आप को थोड़ा न्यू मेथड में लेके यहाँ पे आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में. सो फॉर दैट पर्पज कंपनी नीड्स अ मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सी, the who sells the product to the wholesalers and retailer requires less capital. अगर आप एक चैनल के थ्रू अगर यहाँ पे गुड्स बेचते हो, लाइक अभी आपने अगर होलसेलर से यहाँ पे लिया है तो आपको क्रेडिट यहाँ पे मिला होगा, आपको कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी. अगर आप रिटेलर और इसके बाद अगर रिटेलर को यहाँ पे देते हो तो ये आपको कैश भी दे देता है और थोड़े बहुत फंड आपको बाद में मिलता है. ओके, बट अगर आप खुद ही अगर सब कुछ यहाँ पे करोगे तो आपको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी. नेक्स्ट वन इज द कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन मीन द मर्जर. इफ मर्ज, अगर हम अपने फर्म को दूसरी फर्म के साथ अगर यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, सो वी नीड अ लेस फिक्स कैपिटल. ओके, बट अगर हम अकेले अगर मार्केट में चलना चाहते हैं तो सो देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड बाय द firm. Okay, so this is the fixed capital and the factors.